as R1 and R2 are the distance of point 1 and 2 from the center of Earth and play both as different but for different for gravitational force. We require only distance r, as r1 and r2 are the distances of steps or points, point 1 and 2 from the center of Earth, and they act as different for gravitational force. We require only distance. ठीक है. So we will take average rate, then one point only. So we will take for the 1 point only. So we will take average rate. R is equal to R1 plus R2 over 2 as delta R is equal to R2 minus R1 और R2 is equal to delta R plus R1 ऊपर वाली वैल्यू में पुट किया. R is equal to R1 plus delta R plus R1, तो R is equal to 2R plus delta R over 2. R is equal to R1 plus delta R over 2. F is equal to GMM over R square. तो स्केयर चाहिए होता है, स्केयर ले लिया बोथ साइड. आर स्केयर प्लस डेल्टा आर टू ओवर टू का स्केयर प्लस 2 इंटू आर वन डेल्टा आर ओवर 2 आर वन स्केयर प्लस आर प्लस आर वन इंटू डेल्टा आर टू माइनस आर वन. तो ये बन गया आर वन स्केयर प्लस आर वन आर टू माइनस आर वन फोर निगलेक्टेड आर वन स्केयर. आर वन स्केयर से निगलेक्ट हो गया, तो आर स्केयर बराबर आ गया आर वन आर टू. सो एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर. अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो एंगल बन रहा है 180. ठीक है. सो एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर वन आर टू. सो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज इक्वल टू एफ फ्रॉम 1 to 2 डॉट डेल्टा आर. एफ की वैल्यू डेल्टा आर की वैल्यू और साइन 180 की वैल्यूज पुट कर दी. सिमिलरली ये हो गया वर्क फ्रॉम 1 to 2. सिमिलरली फ्रॉम 2 to 3 3 to 4 1 to 2 3 to 4 1 to 2 2 to 3 3 to 4. If n point is taken at infinity, then its distance from center of Earth r infinity is equal to infinity. Absolute potential energy of a point at distance r from center of Earth. Absolute potential energy at surface of Earth. कोई बॉडी जिसका मास m है, वो उसका फिर डिस्टेंस सेंटर से r हो जाएगा ना. ठीक है. तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे. हायर नेगेटिव वैल्यू मींस स्मॉल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेटर नेगेटिव स्मॉलर नेगेटिव वैल्यू मीन लार्ज
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जितनी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। And the escape velocity corresponds to the initial kinetic energy of an object with which will convert into absolute potential energy of an object, which will convert into the absolute potential energy as initial at initial point. Kinetic energy is equal to half mv escape interconversion of energy. Now as an direct object move upward, then loss of kinetic energy is equal to loss of kinetic energy will now as an object moves upward, then loss of kinetic energy will. Kinetic energy loss is equal to potential energy gain, that is equal to the gain in its potential energy, and it will continuously till as object moves to infinity, where absolute potential energy becomes zero. Loss in kinetic energy is equal to this. Loss in kinetic energy is equal to this. Kinetic energy loss is equal to this. Half mv escape का square. Gain in absolute potential energy is equal to gain in absolute u delta u gain is equal to uf minus ui. ये हो गया kinetic energy loss is equal to potential energy gain. Dependence as we escape in terms of g and r, as we know that the gravitational force on an object in an earth gravitational field is taken as weight is equal to gravitational force.